हैप्पी न्यू ईयर। अब 2026 स्टार्ट हो गया है एंड वी एट टाइम्स ड्राइव हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स दैट यू विल सी कमिंग टू इंडिया इन 2026। तो अगर आप एक नई मोटरसाइकिल खरीदने का नए स्कूटर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यू बीन सेविंग अप फॉर इट, दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बजाज के साथ। राजीव बजाज has said himself that 2026 is going to be the year of the Pulsar. Just to give you some reference over here, इंडिया में अभी 11 डिफरेंट पल्सर के मॉडल्स आते हैं, जिसमें से 3 क्लासिक पल्सर के अंडर आते हैं। अब क्लासिक पल्सर इज द ओरिजिनल पल्सर जो 20 साल से ऑलमोस्ट अनचेंज्ड इंडिया में बिकी जा रही है एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज दैट मोटरसाइकिल। अब एग्जैक्ट कौन सा मॉडल सबसे पहले आने वाला है ये तो हमें नहीं पता, बट वी एक्सपेक्ट कि जो 125cc एंड 150cc पल्सर है दोज विल बी चेंज फर्स्ट। डिजाइन थोड़ा मॉडर्न किया जाएगा। जो सस्पेंशन है, अभी भी ये बाइक्स रियर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स यूज करती हैं, दैट विल बी चेंज टू अ मोनोशॉक। द चैसी विल बी अपडेटेड एंड वी कुड सी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस इन द इंजन एज वेल। अगर इनके अराइवल की बात करूं, सो दीज आर स्लेटेड फॉर द सेकंड हाफ ऑफ 2026 एंड दे विल प्रोबब्ली अराइव इन टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन। Now next up we have Royal Enfield and the most awaited bike from this brand is obviously the Himalayan 750। अब Royal Enfield ने ये बाइक आइकमा में जो इटली में मोटर शो होता है वहाँ पे ऑलरेडी दिखा दी थी, बट स्ट्रेंजली इन्होंने ये बाइक अपने खुद के मोटोवर्स जो इंडिया में होता है विच इज अ फेस्टिवल ऑफ मोटरसाइकिलिंग फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वहाँ पे नहीं दिखाई। But we expect that the 750 Himalayan will be coming to India in 2026, probably the second half of it. Now the 750cc engine is basically made from the 648cc engine that we've already seen on other Royal Enfield bikes, but it's been bored out and obviously it will have new tech. In terms of off-roadability, this bike is expected to have a 19-inch wheel at the front and a 17-inch at the rear. It won't have a more hardcore setup like a 21 and a 17 because the 750 Himalayan is going to be about adventure touring. That means it's a motorcycle you can use everywhere and we expect that it should be launched in India by the end of 2026. Now the next bike we are expecting from Royal Enfield in 2025 is the Bullet 650 and this one could actually come pretty soon, probably in the first half of 2026 or even in the first 3 months. We've seen this bike at EICMA, we've seen this bike at Motoverse, and what basically has happened is that Royal Enfield has finally put its 650cc platform with the engine with the Bullet nameplate on a motorcycle. It's got the traditional Bullet features, it's got that stepped up seat, it's got those hand painted stripes and दूर से देखने में ये प्रॉपर बुलेट ही लगती है। सो दोज ऑफ यू हु लव दैट ओजी बुलेट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, 2026 हैज समथिंग फॉर यू एज वेल। Now there's a bit of wishful thinking coming here, but हम सोच रहे हैं कि Continental GT 750 भी शायद से आ जाए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पहली बात तो Royal Enfield is already making a 750cc engine for the Himalayan, so that is something they can use elsewhere. We've seen them do that with the 650cc platform. दूसरी बात, Motoverse पे हमारे को Royal Enfield की Continental GT 750 रेस बाइक भी देखने को मिली थी। Now obviously the race bike is a completely different motorcycle than what you will probably see on the road, but they have already got a platform, they've already got a bike put together. So maybe if they want to expand the 750 platform and they've got the time and R&D on their hands, maybe, just maybe, the Continental GT 750 could be coming in 2026. Now Honda is a brand I really love for the smoothness, for the refinement on offer, and whenever a new bike is coming, I get really excited. But for 2026, we are actually going to see a new piece of tech coming from Honda on their bikes. It's called the E-Clutch system. Now India में जो Honda की CB650 वाली रेंज है, वहाँ पे ऑलरेडी हमें E-Clutch टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता है। अब आने वाले समय में in 2026, the NX500 which is an ADB, the XL 750 Transalp which is again an ADB, and the Hornet 750, these 3 motorcycles are expected to get the E-Clutch update. E-Clutch क्या है? बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक क्लच। आप राइड कर रहे हो मोटरसाइकिल, आपको क्लच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाइक इलेक्ट्रॉनिकली उसको एक्चुएट करती है। आप इसको 3 डिफरेंट सेटिंग्स में रख सकते हो, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। दिस इज बेसिकली द अग्रेशन लेवल ऑफ द शिफ्ट्स एंड साथ ही साथ आप इस सिस्टम को ऑफ करके मैन्युअली भी क्लच को यूज कर सकते हैं। दैट्स अ गुड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैव, क्योंकि बड़ी बाइक्स में कभी कभार स्टॉल होने का डर रहता है एंड दिस removes that problem from the equation. Now one addition to this list which is a bit of a surprise to me is the BSA Thunderbolt, because for the first time we saw this ADV from BSA at EICMA. This is basically a heavily revised version of the SD Adventure, and what's so promising about this motorcycle is the way
it looks like a proper rally bike that probably belongs in a rally like the Dakar. And from the looks of it, this is a motorcycle that's going to be really great for remote overlanding, for crossing deserts or forests, stuff like that. We don't really know a lot of mechanical information about this bike as of yet, but from what has been indicated to us by the company, we expect that this motorcycle could be coming in 2026. So that's going to be one more ADV option for you in the year 2026. Kawasaki. Now we've got one model here, the ZX-10R. अब ये बाइक जो है already unveil करी जा चुकी है and global markets में it's expected to go on sale in the middle of 2026. Similar time frame पे ये इंडिया में भी आ सकती है, probably the second half of 2026. अब यहाँ पे अगर मैं changes की बात करूँ तो what Kawasaki has done is they've added aero components to the motorcycle, which increased the downforce by about 25%. To compensate for all of that, they've also made some changes to the chassis geometry, and जो ram air intake है जिससे engine की तरफ air जाती है, that has also been repositioned. थोड़ा बहुत यहाँ पे नया डिजाइन देखने को मिलेगा, बट जैसे कि कावासाकी करता है इंडिया में अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स काफी जल्दी ले आता है, so we expect that the updated ZX-10R will also be coming to India in 2026. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर इज हीरो एंड यहाँ पर भी हमारे को एक नई मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी विच इज दी XMR 250. अब हीरो ने कुछ साल पहले करिश्मा नेम को वापस लाया था विद दी XMR 210. वो बाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी चलाने में, बट सेल्स वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा उसने नहीं किया था. Hero is looking to change that with a bigger model that is the XMR 250. अब ये मॉडल हमारे को 2024 आइकमा में ऑलरेडी देखने को मिला था, तब से अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, बट जो हीरो की नेकेड मोटरसाइकिल है सिमिलर इंजन के साथ वो इंडिया में ऑलरेडी बिक रही है. सो वी एक्सपेक्ट दैट 2026 में करिश्मा XMR will be launched in India, and I for one am again eagerly waiting to ride this motorcycle. KTM. अब इस बाइक मेकर की तरफ से हमारे को दो नए लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं. Now the first one will be the 390 Adventure R. This will be a more off-road focused variant of the 390 Adventure that we already know to be a very good off-road motorcycle. अब 390 Adventure R में आपको देखने को मिलेगा 230 millimeters of suspension travel at both ends, specifically designed WP Apex suspension जो ऑफ-रोडिंग में काफी यूजफुल होने वाले हैं with a wide level of adjustability, and साथ ही साथ 272 millimeters. I'll say that again, 272 millimeters of ground clearance. अब ये बाइक मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ for one reason. This is going to make trail riding quite accessible in India. साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं उनको भी आई बिलीव ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है. The second model we are expecting from KTM is the RC 490. Now this one is again a bit of wishful thinking. इसके स्पाई शॉट्स हमने ग्लोबली देखे हैं, बट अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है इस मॉडल का क्या होने वाला है. जो RC 390 है इंडिया में वो ऑलमोस्ट अब बिक नहीं रही है. इट्स ऑल्सो नॉट बीन अपडेटेड टू बी ऑन द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म एंड फीचर द लेटेस्ट इंजन जो ड्यूक और KTM 390 एडवेंचर में हमें देखने को मिल रहा है. बट क्योंकि हमें पता है कि KTM इज टेस्टिंग एन RC 490 विच इज अ ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म, maybe they might just skip the RC 390 for this generation and bring in the RC 490. None of this is confirmed, this is just guesswork. So will this model come to India? If that does happen, it will probably be by the very end of 2026. Now Yamaha held an event in November 2025 where they showed us 4 new motorcycles, 2 of which were launched right then and there, and 2 were new products for 2026. Now the 2 new products were 2 electric scooters. One's called the Aerox C, the other one is the EC06. Now the Aerox C has been developed by Yamaha. It uses the Aerox platform and they have electrified it. The other one, the EC06, has been developed by Yamaha in collaboration with River Indy. अगर आप उसकी फोटो देखोगे, you will see that the EC06 looks quite similar to the River Indy. So these are 2 new electric scooters that are going to be coming from Yamaha. अब यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्ट्स हमने ऑलमोस्ट अपनी रेडी फॉर्मेट में देखे थे, तो they could very well be coming to India in the first half of 2026 itself. Now the next bike maker on our list here is Triumph. अब Triumph के कोई set plans नहीं है, कोई confirmation यहाँ पे नहीं है, but the one bike we expect that Triumph will bring to India is the Trident 800. क्यों? क्योंकि पहले अगर आप 400cc वाली बाइक्स Triumph की हटा दो जो बजाज के साथ पार्टनरशिप में बनी है, the Trident 660 was the entry level motorcycle into the Triumph brand, and now people are wanting more and more cc, so that's why they've also got the 800 in global markets, which is already on sale. So
to probably bolster their portfolio in India and to give customers more options, the Trident 800 could come to India. Now it uses the same engine from the Tiger Sport 800, so there's a lot of familiarity over there. It makes about 115 horsepower and 84 Newton meters of torque. It's not a confirmed launch, but we highly expect this motorcycle to come to India in 2026. BMW. This is going to be one motorcycle I am really eagerly waiting for, and that is the 450 GS. अभी हमने ऑलरेडी भारत मोबिलिटी एक्सपो पे और बाहर अलग ऑटो शोज पे, आइकमा पे, इन सब पे देख रखी है मोटरसाइकिल. And this motorcycle will come in as the entry-level ADV from BMW. Now that is because it will be replacing the 310 GS. This will be a twin-cylinder engine making about 48 PS, 43 Newton meters. So अगर segment में बात करें तो power वगैरह बिल्कुल जो top level bikes हैं उनसे match यहाँ पे होने वाली है. And because this is a BMW, this will not just be any ADV. It will actually be a premium ADV in the small space. तो आपको यहाँ पे heated grips जैसे features देखने को मिलेंगे जो छोटी बाइक्स पे आसानी से नहीं मिलते हैं. पेंट क्वालिटी, फिनिश लेवल जो भी है वो प्रॉपरली BMW लेवल्स होने वाले हैं. एंड अल्टीमेटली दिस इज अ स्मॉल बाइक फ्रॉम BMW दैट आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड एंड विल probably be launched in January of 2026 itself. तो ज़्यादा इंतजार इसके लिए करना नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पे the list of motorcycles that we expect could be coming to India in 2026 वो तो खत्म हो गई है, but there are two new manufacturers that I want to talk about. The first one is Norton Motorcycles. अब 2020 में TVS ने Norton Motorcycles जो एक ब्रिटिश ब्रांड है उसको खरीद लिया था, and in 2025 we've seen what Norton is going to be doing. Now they've been developing super bikes, a street naked V4, a super sport V4. They've been developing a 700cc off-road ADV, and from what we know they're also working on 400cc and 600cc platforms. Now most importantly, a 400cc ADV that could probably be their first product for the Indian market. But what I really want are, well, Norton, bring your super bikes first. The Manx are. Now those look really good, make more than 200 PS of power, and those are the Norton motorcycles I'm eagerly waiting for. Apart from that, VinFast, which is a Vietnamese brand, is also coming to India. Well, the cars have already been launched in 2025. Now VinFast invited us to Vietnam to have a look at their facilities to see the kind of things they make, and from what we know, they make a lot of electric two-wheelers as well. What's going to be happening here is that VinFast is right now working on figuring out how to bring their products into India, how feasible they are. But from what we know and in our interaction with VinFast, it's pretty clear that the brand plans to enter India at a wide scale, and electric two-wheelers will be coming from them probably by December 2026. Now with that, we wrap up our video of the upcoming bikes and scooters in 2026. What I want to know is, which of these bikes or scooters are you waiting for? कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल या बाइक है यहाँ पे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? You know where to tell me in the comment section down below. Now once again, Happy New Year for 2026. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.